Yes, ठीक है ठीक है ओके मैम ठीक है और वो प्लांट्स कहाँ है? A very good afternoon to all. We all have gathered here on this auspicious occasion of World Water Day. World Water Day is observed on March 22 every year to highlight the importance of water and inspire the efforts to conserve it. The day aims to bring attention to global water crisis and the need to sustainably manage the freshwater resources. So now I would like to request Honorable Minister of State for Jal Shakti and Tribal Affairs to felicitate Honorable Minister of State for Okay. So now moving on to today's event, I would like to request Ms. Archana Verma, Additional Secretary and Mission Director, to give the welcome address. Honorable, please mute the mic. Honorable Vishweshwar Tudu, sir, Minister for Department of Drinking Water and of Water Resources and Tribal Affairs. Honorable Prahlad Singh Patel, sir, Minister for Department for Drinking Water, Food Processing, Ministry of Jal Shakti. Ms. Debashri Mukherjee, Special Secretary, Ministry of Jal Shakti. Ms. Usha Pawar, DDG Prasar Bharati. Shri Chandrasekhar Biradar, Country Director, ICRAF. Respected seniors, dear colleagues from center and states, and all school children and teachers who have gathered here, and the young ones from Nehru Yuvak Kendra, and dear friends, a very good afternoon to you all. I welcome you all to this auspicious occasion of the World Water Day 2023. The theme of this year's World Water Day is Accelerating Change to Solve the Water and Sanitation Crisis. कहते हैं आप प्यार के बिना जी सकते हैं, पानी के बिना नहीं. Water is life, and it cannot be an isolated government endeavor. Our Honorable Prime Minister, who is himself a great water champion, has given the clarion call for Jan Bhagidari to make Jan Andolan into a Jal Andolan. Jan Sahyog is crucial for achieving the Sustainable Development Goal on Water, which is SDG 6, which says, the main objective of which is access to clean water and sanitation for all. शायद आप सोचते होंगे कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, एक अकेला चना क्या कर सकता है? बहुत कुछ. Being conscious of our water use and making changes in our daily lives, you can be part of the solution. Small actions like turning off the tap while brushing your teeth, fixing leaky faucets, and reducing our water consumption can go a long way in preserving our water resources. The Jal Shakti Abhiyan Catch the Rain 2023 was launched in the gracious presence of Honorable President Ma'am on 4th March 2023, and with the theme of strengthening of water resources for drinking water, and with special focus on the women as Jal Shakti se Nari Shakti and Nari Shakti se Jal Shakti,
women not only as beneficiaries of 11 crore Har Ghar Jal, but also as our water warriors and agents of change. आज का जो इवेंट है उसका मेन फोकस हमारा विमेन एंड चिल्ड्रन है, क्योंकि विमेन और यंग गर्ल्स को ही सबसे ज़्यादा बोझ उठाना पड़ता है अगर उनके इलाके में पानी स्कैर्स हो। तो आप बहुत सी तस्वीरें देखते होंगे जिनमें वो घड़ों में को सर पे लेके पानी लेने दूर दूर रिवर्स के पास या वेल पे जाती हैं, या टैंकर्स के लिए वेट करती हैं अर्बन एरियाज में। और इसीलिए बहुत सारी लड़कियां जो शायद हीमा दास बन सकती हैं, जो शायद हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बन सकती हैं, जो शायद मेरी कॉम बन सकती हैं, नहीं बन पाती हैं बस इसी बोझ की वजह से। तो हम लोग वी आर वेरी ग्रेटफुल ऑल्सो टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिन्होंने एनसीईआरटी के साथ मिलके हमें 12 चैनल्स में 50,000 बच्चों से आज जोड़ा है, और जो हमारे इस वर्ल्ड वाटर डे के इवेंट को देख रहे हैं। We are very grateful. We thank Ministry of Education. We are also grateful to DG Nehru Yuva Kendra, Shri Nitesh Mishra, for inviting members and young people from the Nehru Yuva Kendra to watch this. So मुझे लगता है कि शायद 1 लाख से भी ज़्यादा लोग combined with respected seniors and colleagues from state इस event को देख रहे हैं। हमने एक और पोर्टल बच्चों के लिए लॉन्च किया है जिसका नाम है जल इतिहास। ये जल इतिहास पोर्टल जो है हमारे वाटर हेरिटेज स्ट्रक्चर्स जो 100 साल से भी पुराने हैं उनको दर्शाता है। हमारी मैस्कट जो पीकू है वो हमें इन पुराने वाटर हेरिटेज स्ट्रक्चर्स जिनको हमारे एंसेस्टर्स ने बहुत संभाल के रखा था उसको दिखाती हैं, और ताकि हमें पानी के लिए रिस्पेक्ट हो, ताकि बच्चे जाने कि वाटर एक गिफ्ट ऑफ नेचर है और एक प्रेशियस रिसोर्स है जो अगर समझदारी से खर्च नहीं किया गया तो खत्म भी हो सकता है। और एक बहुत क्यूट चीज जो नमामि गंगे ने अशोक सर ने जो लॉन्च किया है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, वो है चाचा चौधरी सीरीज, और साबू के साथ वो लड़ते दिखाई देंगे चाचा चौधरी, हमारे जो गार्बेज डंपर्स हैं जो अर्बन एरिया को गंदा करते हैं, ताकि हमारी नदियां जो हैं वो साफ रह सकें। और आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं एक स्नीक पीक ऑफ प्रसार भारती का एक बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है जस्ट जूनियर, जो एक एनिमेटेड सीरीज है। तो उसमें मैस्कट हमारा पीकू और हमारे बच्चों के साथ एक कॉन्वर्सेशन करेगा, और ये प्रोग्राम बहुत ही पॉपुलर है जिस आज हम आपको एक टीजर दिखाने जा रहे हैं, और ये लॉन्च होगा जल्दी बाय दूरदर्शन, एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू दूरदर्शन एंड सीईओ प्रसार भारती फॉर दिस। और वी ऑल्सो एक छोटा सा मूवी है जिसमें प्रकृति जो मिशन लाइफ है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मिशन लाइफ के बारे में हमेशा बात करते हैं कि हमारे जो कंजम्पशन पैटर्न है, जो डेवलपमेंट पैटर्न है, उसको सस्टेनेबल होने के लिए हमें लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के प्रति सजग रहना पड़ेगा। तो इसके लिए आज एक छोटा सा फिल्म हम दिखाएंगे जिसमें पीकू और प्रकृति जो कि मिशन लाइफ की मैस्कॉट है, दोनों मिलकर पानी बचाने के लिए ताकि हमारा भूजल और एक्यूफर्स रिचार्ज रहे उसके बारे में बात करेंगे। So in the end, I only want to say कि water is a precious gift of nature, and अगर हम sustainably manage ना करें तो हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए जिस तरह हम मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर, गुरुद्वारे में जिस तरह का रिस्पेक्ट फील करते हैं, उसी तरह का रिस्पेक्ट हमें पानी के लिए भी होना चाहिए। और आज से ही हम प्रण ले, हमारा एक छोटा सा प्लेज भी है कि हम पानी को सुरक्षित रखेंगे। क्योंकि अंत में ये कहना चाहूँगी
जिससे अब तक ना समझे वो कहानी हूं मैं, मुझे बर्बाद मत करो, पानी हूं मैं। धन्यवाद। Thank you very much, ma'am, for your inspiring and beautiful words. Moving ahead, now I would like to welcome Ms. Debashri Mukherjee, Special Secretary, DOWR, RDNGR, Ministry of Jal Shakti, requesting her to enlighten us on this occasion. Honorable MOS Jal Shakti, Prahlad Singh Patel, sir. Honorable MOS Jal Shakti, Vishweshwar Tudu, sir. Colleagues present here, or my dear young friends. It is a great pleasure for me to be here on the occasion of World Water Day. वैसे तो हर दिन पानी का होता है, हर पल पानी का होता है, हम सब पानी के होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा दिन है where we actually remember how important water is for us and how we tend to take water for granted. So this is a good occasion to sort of remind ourselves that managing water effectively, managing water sustainability is the bedrock of progress and development. Civilizations have grown around water, civilizations have been destroyed for lack of water. And for my young friends there, that is the big message. मैं बस 2-3 बातें कहना चाहूंगी आज, बाकी सारी चीजें तो चर्चा होगी और बड़ी और आगे भी चर्चा होगी. But for me, 1 or 2 things. One is that all of you would be aware that climate change is significantly affecting the water cycle. You must in your lives be seeing that there are more extreme rain days in times when it is not supposed to rain. There are longer dry spells when we keep saying कि बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हुई. इस दिन को तो बारिश होती है, लेकिन इस बार नहीं हुई. So the water cycle is affected by climate change. And this is really affecting us. We need to prepare to do things that will help us to combat these changes. और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एक चीज जो हम लोग पिछले 2019 से प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को जो राह दिखाया था, वो हम जिसे कहते हैं जल शक्ति अभियान, कैच द रेन कैंपेन. तो हमारे जल शक्ति अभियान के तहत हर साल हम बरसात से पहले बरसात के पानी को संजोने के लिए, बरसात के पानी को कलेक्ट करने के लिए, ताकि हमारे पास एक वाटर बैंक हो फॉर टाइम्स when you don't have precipitation, when you don't have rains. So जिस तरह से हम लोग मतलब दिवाली से पहले घर की सफाई करते हैं, उसी तरह से जल शक्ति अभियान के तहत हम बरसात से पहले ये तैयारी करते हैं कि पानी का एक एक बूंद हम संजो सके. So since 2019, every year we have been implementing the Jal Shakti Abhiyan, and we need everybody to come forward to make water everybody's business, to make this Jal Shakti Abhiyan a success. What can young people do? And here I have 4 suggestions. You should discuss in your classrooms, you should discuss among your friends and try to find more things to do. 1, we have rainwater harvesting structures all over the place. Check the rainwater harvesting structures in your schools, in your colleges, in your colonies, wherever you are. See if they are clean, see whether they're broken down, see whether they're ready to receive the rain. This is a great service that each of you can do. The second is, do you have water bodies, ponds, talabs in your vicinity? Are they silted up? Are they polluted? Can you, in your school, create a movement to clean your water body? Can you ask your parents, your colonies to take up those water bodies and clean them? Can we take responsibility for those water bodies? तो ये दूसरे सुझाव है मेरा. Third is, in your habits, try and minimize water use, because every drop saved is important. Try and minimize water use. So think about your water use practices. Also discuss what you're eating. तो
जो आप खा रहे हो उसके लिए कितना पानी लग रहा है. So if we look at water crops that use a lot of water, if that is what we eat, then that is what people will sell, and therefore that is the kind of water that the water use grows. The last suggestion, and this everybody will tell you, is plant as many trees as you can. Plant trees, take care of trees. And these are my suggestions. We should have a very, very positive World Water Day to make water, water is so important in our lives, but we should ensure that we replenish the water that we have. Thank you. Thank you, ma'am, for your inspiring word. This will go a long way in igniting our young minds. So, Water for Life is personally connected with the life of a woman. And today, on this occasion of World Water Day, let's come all and pledge to save water for life, to encourage Nari Shakti se Jal Shakti and Jal Shakti se Nari Shakti. May I now request Honorable Minister of State for Jal Shakti and Tribal Affairs and Honorable Minister of State for Jal Shakti and Food Processing Industry and all respected guests to take the water pledge. Today, on the occasion of World Water Day, I pledge to conserve water and to use water wisely. I pledge to consume water judiciously and not waste even a drop of water. I will treat water as a most precious treasure that I possess and consume it accordingly. I pledge to motivate my family, friends, and neighbors to use water wisely and not waste it. It is our planet and only we can save it and thus save our future. Thank you. Moving ahead, I would like to welcome Shri Prahlad Singh Patel ji, Honorable Minister of State for Jal Shakti and Food Processing Industry, to enlighten us with his kind words. अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के अवसर पर उपस्थित माननीय श्री विश्वेश्वर टुडू जी, माननीय देवश्री मुखर्जी जी, अर्चना वर्मा जी और सभी अधिकारीगण और जो लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी नौजवान मित्रों, सबसे पहले तो मैं आप सबको विश्व जल दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और मैं ये मानता हूं कि मेरे गुरुदेव एक वाक्य कहते थे कि संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता और संकल्प में विकल्प खोजने पर महानतम कार्य रुक जाते हैं। आज का दिन संकल्प का दिन है। बाकी समय तो हम चर्चाएं करते हैं, चिंता बताते हैं, समाधान भी बताते हैं, लेकिन शायद पालन करने का संकल्प नहीं ले पाते। तो मेरी पहली प्रार्थना होगी कि आज के दिन जो लोग इस कार्यक्रम में शामिल हैं वो स्वयं संकल्प लें और फिर अन्य लोगों को प्रेरित करें। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने जल के प्रति सिर्फ चिंता व्यक्त नहीं की, एक तरफ जल जीवन मिशन के नाम पर हर घर जल देकर 55 लीटर प्रति व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में पानी देने का संकल्प पूरा करने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो चुनौती है कि जब देश की आज़ादी के बाद का जो हमारा अनुमान था
कि एक व्यक्ति पर जहां 5,000 लीटर से ज़्यादा पानी उपलब्धि थी, वो आज के दिन घटकर 1400 से 1500 के बीच रह गई है। और ये अनुमान है कि आने वाले 25 साल में ये आंकड़ा 1100 लीटर के आसपास में होगा। और उस समय तक अनुमान ये है कि हम प्रति व्यक्ति जो हमारा पानी का खर्च होगा वो 1,100 लीटर प्रति व्यक्ति हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम पानी कहाँ से लेकर आएंगे? नौजवानों को ये भी ध्यान में रखना होगा कि हम दुनिया की आबादी का 18% भारत में रहता है और शुद्ध पीने का पानी कुल 4% हमारे पास है। अब ये तो आंकड़े हुए जो हमको गंभीरता देते हैं कि हमें आने वाली पीढ़ी का अगर सुखद भविष्य चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए। हमारे मनीषी ब्रह्मसूत्र में और उपनिषद में कहते रहे, एक पिता होने के नाते मैं कष्ट भोगने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं अपने आने वाली संतान को सुखी और संपन्न देखना चाहता हूं। ये उनका संकल्प था। प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल के पहले, जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे, तभी ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कही थी। लेकिन उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि एक हर जिले में 75 तालाब अमृत सरोवर के नाम पर, चाहे सरकार किसी की हो, उसे खोदना चाहिए। और ये काम आज मूर्त रूप ले रहा है। 60% से ज्यादा अमृत सरोवर बन गए। दूसरी बात होती है कि डेफिसिट बेसन और सरप्लस बेसन का जो गैप है, जब तक हम उसे नहीं पाटेंगे तब तक हम अपने आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित जल नहीं दे सकते। और इसलिए नदी जोड़ों की जो कल्पना है उसमें कैन बेतवा के नाम पर वो भी मूर्त रूप ले रही है। ये पहला उदाहरण है जब हम डेफिसिट बेसन और सरप्लस बेसन को जोड़कर हम अपनी इस रफ्तार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा संकल्प है कैच द रेन। मैं आपको, देवश्री जी ने आपको संकल्प दिलवाया है, मैं आपको दूसरी बात कहता हूं, क्या हम संकल्प ले सकते हैं कि वर्ष भर में जितना पानी हम उपयोग करते हैं एक व्यक्ति के नाते, बरसात में किसी भी सोर्स से, वो पब्लिक सोर्स हो या प्राइवेट सोर्स हो, क्या उतना पानी मैं व्यक्तिगत तौर पर जमीन के भीतर डाल सकता हूं? ये संकल्प मैं ले सकता हूं, तो फिर मैं आने वाली पीढ़ी के सुखद भविष्य की कामना कर सकता हूं, अन्यथा उसके सामने चुनौती बढ़ेगी। तीसरी बात होती है कि जो हमारे सोर्स है, चाहे वो बांध हो चाहे वो तालाब हो, उनकी कभी भी हमने संकल्प के साथ में डीसिल्टिंग के बारे में सोचा नहीं। इस बार प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम डीसिल्टिंग पॉन्ड्स हो या डैम्स हो, रिलीजियसली उसके बारे में संकल्प ले, तो हम अपने सोर्स जो हमारे पुरखे बनाकर हमको दे गए, शायद उनकी कैपेसिटी को भी अगर हमने बना के रखा तो अभी हम चुनौती को कम कर सकते हैं, चुनौती को पूरा भले ना कर पाए। स्वच्छ भारत मिशन, हम हर दिन एक परिवार को 55 लीटर पानी, एक व्यक्ति को देते हैं 55 लीटर पानी। 24 घंटे में वो ग्रे वाटर बनकर हमारे सामने होता है। ग्रे वाटर मैनेजमेंट सबसे बड़ी कसौटी है और इसलिए चाहे हम एसटीपी के माध्यम से अपनी नदियों के संरक्षण का काम करें या गांव से लेकर शहर तक के जीवन में अगर ग्रे वाटर मैनेजमेंट पर हमने ध्यान दिया तो अभी शायद हम रॉ वाटर को बचाकर आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित दे सकते हैं। और मैं मानता हूं गंगा मिशन के नाम पर यह अभियान सफलता के चरम पर है और हम गर्व के साथ कह सकते हैं सिर्फ गंगा नहीं, देश की वो सभी सप्त नदियां जो पवित्र मानी जाती हैं, जो उपयोगी हैं, जो जल के स्रोत हो सकती है, उनको बचाने का हम काम कर सकते हैं। अंत में मैं ये कहूँगा कि जो पानी वर्षा के माध्यम से आता है वो समुद्र में चला जाता है, हम उसे रोक नहीं पाते। हम चाहे जितने हमारे ड्राइव इलाक हो जहाँ पर भूजल अटल भूजल योजना चल रही है, लेकिन मैं मानता हूँ कि जहाँ पर क्राइसिस नहीं है वहाँ पर भी लेवल मेंटेन करने के लिए हमें अपने इन अभियानों को गति देनी होगी। अभी हम डेफिसिट ब्लॉक्स के बारे में सोचते हैं, लेकिन सरप्लस एरियाज में भी अगर लेवल नीचे जा रहा है तो आज से ही हमें चेतने की जरूरत है। मैं अंत में एक उदाहरण के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। बुद्ध ने के सामने जब अंगुलीमाल आया था तो वो डरे नहीं, उन्होंने कहा एक पत्ता तोड़कर मुझे दो। अंगुलीमाल ने दे दिया, उन्होंने कहा कि अब इस पत्ते को लगा दो, तो उसने कहा क्या बेकार की बात करते हो। मुझे लगता है ये उदाहरण सबसे सटीक है। आज जो लोग पानी को गंदा करके फेंक देते हैं, अगर मैं उनसे प्रश्न करूं कि 1 लीटर गंदे पानी को अगर शुद्ध बनाने में जो खर्च आएगा, अगर उसका अगर आप पैरामीटर्स देखेंगे, मैं बच्चों से कहूंगा कि आप चाहे हमारे इस्पात संयंत्र हो चाहे हमारे मांस के उद्योग हो, जो गंदा पानी 1 लीटर स्वच्छ करने में खर्चा आता है, अगर उसका अनुमान आपको हो जाएगा
तो शायद आपके पानी की हर बूंद की कीमत जरूर आप एहसास करेंगे। आज ये संकल्प लीजिए। इसी निवेदन के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। Thank you very much, sir, for your inspiring words. One of the most impactful campaigns of Government of India, Jal Shakti Abhiyan Catch the Rain, has brought a revolution throughout the country when it comes to conserving and managing water. May I request Honorable Minister of State for Jal Shakti and Tribal Affairs and Honorable Minister of State for Jal Shakti and Food Processing Industry to launch the e-flip book on best practices on JSA CTR. Thank you, sir. To make an impact on younger generation and ignite their mind towards water conservation, a special program, Just Junior, have been designed by Prasar Bharati. So, let's have a sneak peek on the Just Junior program, a soon-to-be released animated series featuring NWM mascot Piku. अरे पीकू, क्या चले ऐसे जगह जहाँ हो पानी, हो हरियाली, ना हो सूखे पेड़ों की डाली और हो सूरज की जहाँ रोशनी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलते हैं। जल घर घर लाना है, देश को सजग बनाना है। अरे वाह पीकू, तुम बड़ी समझदार हो गई हो। मैं जल्द आ रही हूँ आपके फेवरेट शो जस्ट जूनियर में, सिर्फ डीडी नेशनल पर। अरे पीकू, क्या चले? अरे पीकू, कोई कहानी सुनाओ ना। सुनाती हूँ। एक बार की बात है जब धरती पर पानी हुआ करता था। हाँ, ये कैसी कहानी? धरती पे हमेशा पानी रहेगा। घर घर में जिस तरह से बर्बाद किया जा रहा है पानी, डर है कि कहीं ये बन ना जाए एक कहानी। क्योंकि जल बिना कल नहीं, जल नहीं तो कल नहीं। अरे पीकू, कोई कहानी सुनाओ। उसकी कहानी। किसकी कहानी? किसकी कहानी? अरे जल की कहानी। हाँ हाँ, जल की कहानी। अगर आज बचेगा जल, तभी तो सुरक्षित रहेगा हमारा कल। Coming soon on DD National. Next, let us... मैं प्रकृति धरती माँ का लाई हूँ संदेश, पीकू संग आई हूँ देने महत्वपूर्ण निर्देश। टप टप बरसे बारिश का पानी, उसकी हर एक बूंद बचानी। छत छत जैसे बहती धारा, इकट्ठा कर टंकी में उतारा। सामूहिक तालाबों को बचाया, उस जल ने खेती को संवारा। कुआं पुनर्भरण और टपक पद्धति जल संचय के बने आग्रही। हर टपकते नल को बंद है करना, वर्षा जल का संचय करके भूजल के स्तर को है बढ़ाना। बारिश का पानी संरक्षित होगा तो भूजल का स्तर बना रहेगा। मैं प्रकृति साथ में पीकू करते हैं अनुरोध, जल का मोल समझकर जन जन तक पहुँचाओ बोध। Next, moving on to the presentation of best practices under JSA-CTR from the state. We are joined by Shri Chanchal Rana, Collector and District Magistrate, Bolangir, Odisha, Ms. Stuti Charan, Collector, Chota Udaipur, Gujarat, Captain Shakti Singh, Deputy Commissioner, Bijapur, Karnataka,
Shri Vijay Mahantesh, Deputy Commissioner, Bijapur, Karnataka, Ms. Soumya Pandey, CDO, Kanpur Dehat, Uttar Pradesh. I hope all are present. Now, I would like to welcome Shri Chanchal Rana, Collector and District Magistrate, Balangir, Odisha, to endear us with his kind words. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Honorable Minister of State Jal Shakti and Tribal Affairs, Shri Visweshwar Tudu, sir. Honorable Minister of State Jal Shakti and Food Processing Industry, Shri Prahlad Singh Patel, sir. Vishisht Atithigan, Madam and sirs, good afternoon. Thank you, ma'am, for giving an opportunity on the occasion of World Water Day. I'll like to briefly mention about the community participation and the role of Pani Panchayat, and this with special focus on the women who are playing a major role in ensuring that the Jal Shakti, the National Water Mission, is implemented properly in Bolangir district. I hope the slide is being played. I've sent a PPT. I'll continue meanwhile. नहीं वो वीडियो है जो पार्टी स्लाइड पीपीटी भेजी गई Balangir, a district in western Odisha, is one of the most drought-prone area in the state. This is a video, with more madam. than 80% of its population depend on Chanchal, let the video play on. उसके बाद you can just talk. PPT Yeah, sure. नहीं है. Yeah, sure. Okay, okay. rain-fed agriculture. The district faces drought-like situation in every alternate year. The district received 1290 mm rainfall, but due to inappropriate planning, monitoring, and management of water resources, the groundwater level has declined. However, over the past 3 years, the issues have been successfully tackled with the help of community partnerships. Farmers were mobilized into more than 1200 Pani Panchayats and water user associations. In line with the Odisha Pani Panchayat Act 2002 and Rule 2003. Mostly in minor irrigation project, river lift irrigation project and community participation in cluster borewells and Amrut Sarovar tanks. Women farmers have been actively involved in the management of water resources. With 1/3 of the representatives in the Pani Panchayat and water user associations being women, the community has been actively participating in the repair and maintenance of tanks, planning irrigation schedules, and crop planning. As a result of these efforts, the irrigation potential of the area has increased from 32% to 41% over the past 3 years. Additional 33,220 hectares of land have been brought under various river lift irrigation and cluster borewell projects. 225 hectares under Amrut Sarovar and 4,749 hectares of minor irrigation tanks, covering about 38,000 small and marginal farmers. Women self-help groups and primary fishery cooperative societies, farmer producer organizations have been actively involved in various livelihood activities to augment income. These community-based institutions have not only set an example for actively involved in water management, but also brought transformation in the life and livelihood of many. With these community-led efforts, Balangir is slowly transforming from a drought-prone district to a prosperous agricultural region. Thank you. The voiceover has actually been also given by a woman Pani Panchayat member from Bolangir district, madam. Bolangir belongs to the western part of Odisha, and it is actually traditionally a part of the KBK region, and it's a drought-prone region.
there has been a gradual decrease in the water table in the last 5 to 6 years, which has been scientifically monitored with the groundwater, groundwater board. So the main thing that was done in Bolangir is that there were many of the Pani Panchayats which were formed under Pani Panchayat Act. They were all revived, and in the community lift irrigation and the cluster borewell, the water user associations were formed, which were primarily the women self-help groups which were formed under Mission Shakti. Around 1200 Pani Panchayats have been formed, and these comprises of 9 members executive committee and 33% mandatorily they have to be women. They have a number of subcommittees who take into account, who monitor their finances and also do their irrigation scheduling and the water management. For the Amrit Sarovar tanks, this year we have formed water user association, again primarily of the women self-help group members, and in all the cluster borewell projects, the water user groups, around 5,645 water user groups have been formed. The Pani Panchayats, they work on a incentive and disincentive model. The election process is done democratically. There is a collection of minimum levy for the minimum repair and maintenance works. For incentives, they are funded with the many post-harvest management structures, such as with the RMC, the agriculture production cluster groups. There is a focus on few crops in that particular Ayakat area, say 2 or 3 vegetables, and 1 or 2 commercial fruit cultivation is done in the Ayakat area with the involvement of the Pani Panchayats. The backward and forward linkages have also been integrated properly so that the Pani Panchayats, right from growing their own saplings to becoming license holder of fertilizers and pesticides to forming FPOs and FPCs under NABARD, they take care of all the forward and the backward linkages so that the Pani Panchayats are remunerated, they are economically sound at the end of the day. There is a continuous competition among the Pani Panchayats also through Pani Panchayat Awards, which is done annually in the state. The outcome which is visible in the last 2-3 years, there has been all these Ayakat areas, they have seen 2 to 3 times of crops in a year. There has been commercial agriculture which has started, and when most of the interventions are income generating, as shown in the video, there has been an additional 33,000 hectares of land which has been brought under irrigation, and the Prime Minister's vision of more crop per drop and getting more Ayakat area, increasing the irrigation efficiency, that has also been increased. Scientifically, the water table in the entire district has risen by 0.8 meters in the last 3 years. With special focus on women participation, this was really important, and as ma'am said that from Jal Shakti, say Nari Shakti, this is important to make the initiative sustainable, and this has a lot of social ramifications also. The small and marginal farmers, they are actually benefited when the women, they are a part of the Pani Panchayat and the Water User Association. We have around 100 primary fisheries cooperative societies operating among the Pani Panchayats, where 100 women members are there in each of them. More than 21 women self-help groups among these water user associations are engaged in mushroom cultivation. More than 1,000 women self-help groups are involved in hybrid vegetable cultivation and commercial fruit cultivation. They are managing onion storage structures, pack houses, preservation units, vermicompost units, mini dal mill, small oil extraction units, and scientific fish farming as well, with the support of the Niti Aayog grants as well. I think because the PPT we can't show, otherwise I would have shared a few pictures of the transformation that has been done. I'm sorry for that. But this is all the role of the Pani Panchayats and community participation. Jal Andolan is actually possible only with Jan Bhagidari and only when the women are involved in such a transformative process. Thank you very much, sir. Thank you, ma'am. Thank you very much, sir. Moving ahead, I would request Ms. Stuti Charan, Collector, Chota Udaipur, to give us a PPT on rejuvenation and restoration. Namaskar. Ma'am, I would kindly request, hello, ma'am, I would kindly request you to keep it brief. 5 Yes, minutes only. Yes. Okay. Honorable dignitaries, the success story is about the Gathia village of Chota Udaipur district. I request to run the presentation, please.
The Gatia village is a tribal village in Chota Udepuur district. This village has hilly terrain and undulating land. The farmers, the villagers had a lot of issues of scarcity of water. Even for drinking water, irrigation, there used to be a huge problem in the village. So it was decided to minimize the excess runoff from the surface and to increase the infiltration of water into the soil. It was decided to undertake a new project, a new pond in the village with the help of convergence of Manrega. And Gujarat government's ambitious program, a campaign which is called as Sujalam Suflam Jal Abhiyan. Next slide, please. In this Sujalam Suflam Jal Abhiyan, GIS mapping, GIS tools, including Bhuvan portal, was used to identify the location for better precision and better work. More than 9.24 lakh was earmarked for this project. More than 4,000 man-days of employment was generated in this village. This pond is also a part of Amrit Sarovar. Next slide, please. This is the Amrit Sarovar project. And due to this 3 months hard work and various components were taken in Amrit Sarovar as well as Sujalam Suflam Jal Abhiyan, which increased the water table of the village. There was a time it used to be 80 feet. Now it is available at 40 to 50 feet also. Next slide, please. From zero to present situation, now the village is having 15,000 cubic meter of water holding capacity, which is a huge improvement in the water table. And now the farmers are using it for irrigation. There used to be a time it used to be a crop failure, but now because of this new pond, new asset of the village, they are doing 2 crops in 2 seasons, and sometimes depending on the land holding, they are doing 3 crops in a year. It has also reduced the migration of the village. It has also given the employment through Manrega convergence. It has also benefited the villagers and their cattle for water supply. Next slide, please. These are the glimpses of the work which was taken in Sujalam Suflam Jal Abhiyan and Amrit Sarovar. This is the before situation. As you can see, there is to be no structure, and this is the after photo. Right now, this pond is having 15,000 cubic meter water holding capacity till date. Next. As it is part of Amrit Sarovar, the last year, 15 August was celebrated. As you can see, the abundance of water in this village, which has solved the water scarcity issues. Next. Next slide, please. This has been visited by even the Delhi team and also the Prabhari ministers and MP. Next. As you can see, the process of Amrit Sarovar was taken. Next. Kindly play the first video of Amrit Sarovar pond. The first video. अंबर हेठा धरती वसदी एथे हर रुत हसदी हो किन्ना सोना देश है मेरा देश है मेरा देश है मेरा किन्ना सोना देश है मेरा देश है मेरा देश है मेरा देश है मेरा वो तो धरती सुनहरी अंबर नीला धरती सुनहरी अंबर नीला हर मौसम रंगीला ऐसा. Thank you so much for listening. Thank you so much. Thank you, ma'am. Moving ahead, I would request Captain Shakti Singh, Deputy Commissioner Jhajjar, Haryana, to enlighten us on Jal Shakti Kendra initiative taken by the district.
May I request Captain Shakti Singh, Deputy Commissioner Jhajjar? Moving on to the next, I would like to request Shri Vijaya Mahantesh, Deputy Commissioner, Bijapur, Karnataka, to give the PPT on geotagging of water bodies. Thank you, ma'am. Good evening to all. Please. First of all, at the outset, let me extend my wishes to all of you on the day of World Water Day. As you know, Bijapur is one of the driest districts, with the temperature ranging up to 45 degrees in the hot summer, and it has got the very lowest rainfall in the entire country. And the forest cover is also to the extent of only 0.17%. That makes my district most suitable for the campaign under the Jal Shakti Abhiyan. And as we are all aware, one of the component of one of the focused areas of Jal Shakti Abhiyan is enumeration, geotagging, and the making inventory of all the water bodies. We are taking advantage of the one of the web application developed by our KSRAC, that is the Karnataka State Remote Sensing Application Center at Bangalore. We have a Karnataka GIS tank information system, where in which we have tried to capture all the location details of the water bodies, details of the area and dimension of those water bodies, ownership, and we also try to allocate a unique identification number. So all those major water bodies belong to the minor irrigation, major irrigation, those coming under the Jilla Panchayats and also under the urban local bodies. All have been captured, and the database has been created. Advantage of geotagging has been that we could able to find the encroachments that are there along these tanks. We found tanks there were encroachments, and we have taken measures to evacuate the same. And most thing is the management of the water system, because since it's a hot summer and we need water at least for animals also during the summer season. We have a scheme where these tanks are filled up by the water releases from the Almaty Dam that is built across the Krishna River. So we are able to monitor the water availability in these tanks and ensure that the regular filling of these tanks are happening. So that's how we've been able to control the encroachments and also able to ensure the water availability in these tanks and mitigate the water problem during the summer time. And apart from this, Karnataka also had one scheme called Jalamrita, which was announced since 2019. There also have taken up geotagging of all the works taken up under that. And as per the JJM guidelines also, we have developed a RWS, that's Rural Water Supply Borewell app, under which all the borewells, all the overhead tanks, and all the JLSS have been geotagged. And to an extent of, as a state, around 96,000 have been geotagged. In Bijapur also, good number of these water structures have been geotagged. This has a very major help to us, because many times we used to find that same borewell was shown and duplication was done and the money was drawn. Now we are able to prevent these duplication of these works. And the important thing again, groundwater also, the department has taken off the geotagging of borewells also. So far, around 57 borewells have been geotagged. Overall, the technology has helped us to prevent the encroachment. With that, the forest cover, as I said, was 0.17%. Now it has substantially increased this year from 2011. So overall, this is the success in Bijapur district. Thank you, sir. Thank you very much, sir. May I again request Captain Shakti Singh, Deputy Commissioner, Jhajjar, Haryana. So moving ahead now to Ms. Soumya Pandey, CDO, Kanpur Dehat, Uttar Pradesh. I would like to request Ms. Soumya Pandey to endear us with her words on District Water Conservation Plan for Kanpur Dehat, Uttar Pradesh. Thank you, ma'am. Am I audible? Yes, Soumya, you're audible. Right, ma'am. A very good evening to Honorable Minister of State, Shri Vishweshwar Tudu, sir. Respected Archana Verma, ma'am, respected Devashri Mukherjee, ma'am, all esteemed seniors and colleagues.
At the outset, I would like to wish all of you a very happy World Water Day. And I would like to thank Archana ma'am for giving juniors like us an opportunity, and also Devashri ma'am for giving juniors like us an opportunity to share our work. And starting on the note that we started with the note of Nari Shakti se Jal Shakti, it gives immense confidence to junior officers like us in the field when we see that such an important ministry of Jal Shakti is being headed by two dynamic senior women officers, and hence this is being personified, Nari Shakti se Jal Shakti, that if the ministry is being headed by women officers, all the Nari who are there on the ground and also on our villagers, they are getting a lot of confidence that truly Nari Shakti se Jal Shakti will be personified. Starting on that note, the work in Kanpur Dehat, sir and ma'am, was done under the flagship name of Jal Abhishek. There is a small video that we've made. Before the video is being played, I'll take 2 minutes to brief on what the Jal Abhishek Abhiyan was all about. We had made a special logo and getting inspiration from Honorable Prime Minister's Catch the Rain Abhiyan, Jal Shakti Mission. We made a logo for Kanpur Dehat district of UP, in which we made the tagline Jal Andolan se Jan Andolan. We had calculated that if all the things that we mentioned in our plan was done, about 12,700 crore liters of water could be recharged and stored. In this, ma'am, the two basic important things was, number one, water budgeting in each gram panchayat. In each of the gram panchayats, we did water chopal, jal chopal, and made water budgets for each gram panchayat. How much water is available from rainfall, from runoff, how much water is required for agriculture and for human requirements, and how much water are we able to save from the storage structures. In this way, we made a complete GIS-based plan in which we made 13 points. Number one being number of water bodies, Amrit Sarovars, Amrit Vatikas, number of rooftop rainwater harvesting sites, river ecorestorations, drainage parallel lineaments, water use efficiency in terms of crops, soak pits on hand pumps, and FHTCs, functional household tap connections under Jal Jeevan Mission, Har Ghar Nal Se Jal Yojana. And lastly, PPP collaboration with all the industries. So if any industry was given an NOC for groundwater recharge, then they had to do a commensurate groundwater recharge structure, or they had to make a rooftop rainwater harvesting site of the commensurate capacity. All these things were done with help of interdepartmental coordination, and we also made a app called the ePehel app for GIS-based monitoring of all these schemes from grassroots level. I'm happy to share the results with all of you. I'm happy to share the results with all of you, ma'am, that in all our semi-critical blocks of Kanpur Dehat, there has been a significant rise of 2 to 3 meters of underground water level. And this all has been captured in a short video. I would request the team to please play the video. महामहिम राष्ट्रपति जी के आह्वान, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन से जनपद कानपुर देहात में जलाभिषेक कार्यक्रम का शुभारंभ वर्ष 2022 में किया गया, जिसमें मुख्य रूप से विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा तकनीकी एवं वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाते हुए जन सहभागिता के माध्यम से जल संरक्षण एवं जल संवर्धन को बढ़ाने हेतु नवीन पहल की जा रही है। केंद्रीय भूगर्भ जल बोर्ड की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार कानपुर देहात जनपद के 10 में से 7 विकास खंड सेमी क्रिटिकल श्रेणी के अंतर्गत आ गए हैं, जिस पर विराम लगाना अति आवश्यक हो गया है। अंतर विभागीय समन्वय एवं जन सहभागिता के माध्यम से गांव-गांव में जन चौपाल एवं जल चौपालों से वाटर बजट की योजनाएं तैयार की जा रही हैं, जिसमें अमृत सरोवर, अमृत वाटिकाओं का निर्माण और तालाबों का सुदृढ़ीकरण जैसी जल संरक्षण एवं जल संवर्धन परिसंपत्तियों के सृजन करने के लिए एक एकीकृत GIS आधारित रिचार्ज प्लान तैयार किया जा रहा है। जनपद में वृक्षारोपण, भूमि सुधार विभाग के माध्यम से छोटे छोटे बांध, बीहड़ भूमि संरक्षण और लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से सिंगूर, पांडु और रिंद नदियों के जीर्णोद्धार तथा रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली एवं सोक पिटों का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही कृषि व उद्यान क्षेत्र का सर्वेक्षण कर
कम जल खपत वाली फसलों के उत्पादन और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर ड्रॉप मोर क्रॉप के तहत कृषकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जनपद में वन विभाग द्वारा वृहद वृक्षारोपण के कार्यों के साथ भूमि सुधार विभाग द्वारा अकृषीय भूमि पर जल संरक्षण कार्यों को कराते हुए कृषि योग्य भूमि तैयार की जा रही है। कैच द रेन अभियान के अंतर्गत वर्षा जल की हर एक बूंद को बचाने एवं जल की बर्बादी को रोकते हुए हर घर नल से जल को जोड़कर जल संवर्धन की तरफ सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रकार जनपद में लक्षित 12,700 करोड़ लीटर जल बचत की अप्रत्याशित वृद्धि के सापेक्ष अब तक कुल 2,783 करोड़ लीटर क्षमता सृजित कर ली गई है, जो एक नवीन पहल है। इन प्रयासों से तय है कि आने वाले समय में जल आंदोलन से जन आंदोलन की एक मिसाल बनेगा जलाभिषेक 2022 कार्यक्रम। Thank you, ma'am. That was all from my महामहिम side. राष्ट्रपति जी के आह्वान, Thank you, ma'am. माननीय Moving ahead, प्रधानमंत्री I would जी की again like to प्रेरणा, request Captain Shakti Singh, Deputy Commissioner, Jharjar, Haryana, to enlighten us with his kind words on Jal Shakti Kendra initiative taken by the district. If Shakti is not there, we'll just play the Jal Shakti Kendra initiative. Because this is a very important initiative. Oh, he's there. Am I audible? Am I audible? Shakti ji, we will play your Am I video. audible from there? क्योंकि आपका क्लैरिटी नहीं है, उसके बाद आप कुछ बोल सकते हैं। पहले हम वीडियो Thank you, चला ma'am. देते हैं हरियाणा। ओके, Right, ma'am. आप ना थोड़ा हिलिए मत, एक ही जगह पे रहिए, आपका वीडियो थोड़ा हिल रहा है। So we will play the Yeah. Haryana video on the Jal Shakti Kendra ji. जल संचय पर माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रेरित जल शक्ति अभियान एक समयबद्ध मिशन मोड जल संरक्षण अभियान है। जल शक्ति अभियान का उद्देश्य परिसंपत्ति निर्माण और व्यापक संचार के माध्यम से जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना है। दुनिया के सामने एक उदाहरण मिले इसलिए, और भारत में पानी की समस्या का समाधान हो इसलिए कैच द रेन की शुरुआत के साथ ही बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। आज जब हम तेज गति से विकास की बात कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो ये वाटर सिक्योरिटी के बिना, प्रभावी वाटर मैनेजमेंट के बिना संभव ही नहीं है। इस दिशा में अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी 22 जिलों में जल शक्ति केंद्र स्थापित किया। हरियाणा भारतवर्ष का पहला राज्य है जिसके हर जिले में जल शक्ति केंद्र स्थापित कर दिया गया है। ये जल शक्ति केंद्र इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, पानी की एफिशिएंट यूटिलाइजेशन और नई तकनीकों के बारे में लगातार जानकारी दे रहे हैं। हरियाणा माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों के साकार करने में लगातार लगा हुआ है। हरियाणा में इन जल शक्ति केंद्रों के द्वारा स्थानीय लोगों को पानी से संबंधित जानकारी और जल संबंधी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जल संरक्षण के सपने को साकार करने के लिए देश में जिला झज्जर में भी जल संरक्षण के लिए विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया गया। जल शक्ति केंद्र इसकी धुरी के रूप में उभरा। विभिन्न तरीकों से कम पानी कंज्यूम करने वाली फसलों को बढ़ावा दे करके प्राकृतिक जो वाटर सोर्सेज थे उनको दोबारा से रिजुमिनेट करके लोगों में इसके बारे में जन चेतना जागरूक करके इस अभियान को सफल बनाया गया
और मैं अपनी टीम के सभी सदस्यों को, विभिन्न विभाग के लोगों को बधाई देता हूं कि उनकी इस मेहनत से, टीम वर्क से जिला झज्जर हरियाणा भर में प्रथम आया है। आज हरियाणा जल शक्ति मंत्रालय के कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स अभियान में लोगों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। माननीय मंत्री जी नमस्कार। उसका वॉल्यूम कम कर सर। जल शक्ति केंद्र, नमस्कार मैडम। जल शक्ति केंद्र जो हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाया था मैम, इसका बेसिक फंक्शन था टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एजुकेशन एंड ऑल ऑफ द डिपार्टमेंट्स, एंड स्पेशल thrust was given to IEC activities. In addition to that, it was a source of knowledge and knowledge center for all other departments to seek technical advice on whatever work they were doing, whether it was a soak pits, whether it was some kind of check dams or whatever they were doing. So this became a central pivotal point to activate all other departments to achieve their targets firstly, and secondly for the public at large to get information about how to preserve water. Secondly, ma'am, in addition to this, we laid special emphasis on tree plantation, and this Jal Shakti Kendra become a hub center for all these activities, because every day we were holding competitions between schools and other institutions, how many plants we have planted. On one particular day, ma'am, we planted 75,000 plants across different panchayats. That was a benchmark set for other panchayats to follow, and that's how we were able to achieve the targets. And we are sure that Jal Shakti Kendra as a source of knowledge, common knowledge, that will become the pivotal point continuously and will lead us to make higher achievements in this manner. Thank you, sir. Thanks so much. Thank you, sir. Tree plantation helps conserve water. So to mark the Water Day celebration, State Plantation Drive has been organized with SIFA ICRAF at Barmer District, Rajasthan, and at Vijayapura District, Karnataka. So now I would like to request Honorable Minister Shri Visheshwar Tuduji to unveil the tree plantation initiative for Barmer District, Rajasthan. I would again like to request Honorable Minister Shri Visheshwar to... The team in Rajasthan? Yeah. Put the Rajasthan. ये जज्जर है ना? राजस्थान का ट्री प्लांटेशन में था ना? जज्जर में नहीं है। इसी जज्जर। The Satya Ashok, I don't know. बाड़मेर है ना? Yes, ma'am. No, they already waiting. Yeah, they are waiting. Entire team is there. Women, lot of women groups. Women's group है। Women group, forest officer, जल शक्ति। नहीं कर पा रहे हो तो राजस्थान का वीडियो प्ले कर दो। उनके पास है already. They have video. उनका computer. May I request the team from Barmer, Rajasthan to speak something? Hello. Yeah. Hello. Can you hear? Yeah. Yes. So this is the Barmer team of ICRAF along with the forest department and all the village communities. Sarpanch Sahab is there. We all are here to mobilize the community along with the government and NGOs as well as the communities. I think you are seeing here the video or direct live. All are sitting here and planting. Sarpanch Sahab.
can you plant? Plantation kar Can sakte you hain? switch on your camera? I think your camera is off, Krishna. No, it's there online. There's there. Usko. Okay. Okay. So Okay, this now we is, can see. yeah. So you can see here. Yes. This Yes, is go ahead. Sarpanch Saab. Through our trophy program, all of them, they are along with the forest department. DCF Saab is here, and all of the team are working. Can you see the video? Yes, we can see. Please plant the tree. Plant the trees. Yeah. It is there. Please focus on the tree plantation. No, that is the video is the actually second one. Tree plantation पे focus करिए. Tree पे दूर से करिए. हाँ, अब हम देख पा रहे हैं. दूर से. जी. पानी डालिए. Yeah. So whole of the aircraft team are with the village team, and as well as the forest department officials. DCS Saab is here. Sarpanch Saab is here. Yeah. And the women and the children, even the children have joined this movement for Gangavas area. So this is the initiation. Over to you. Actually, the video they गलत दिखा रहा है. Next video, वो दिखा रहा है. Okay, thank you, Krishna. Thank you so much. सरपंच साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद. Moving ahead, I would again like to request Honorable Minister Shri Visheshwar Tuduji to unveil the tree plantation drive for Vijayapura district, Karnataka. I would request the team from Vijayapura district, Karnataka to switch on their camera. Ma'am, nobody is on live. I think it's only recorded video that's going to be played. I'm correct. Okay, we'll be doing that.
Thank you. Moving ahead, I would like to request Shri Visheshwar Tudu, Honorable Minister of State for Jal Shakti and Tribal Affairs, to conclude the program with his inspiring words. आज विश्व जल दिवस है, साथ ही साथ राष्ट्रीय नववर्ष भी है। इस अवसर पर इस कार्यक्रम में जुड़े हुए वर्चुअली एंड फिजिकली भारत सरकार, राज्य सरकार, अधिकारीगण, टीचर्स, स्टूडेंट्स, नेहरू युवा केंद्र का साथीगण, स्टेक होल्डर्स, सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन एवं शुभेच्छा। हमने देखा भी कुछ प्रेजेंटेशन, किस तरह हम लोग पानी का उपयोग करते हैं, संरक्षण करते हैं, अवेयरनेस भी करते हैं। वाटर इज एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, क्योंकि जैसे हम कह सकते हैं कि 1-2 दिन बिजली नहीं रहेगा भी हम जी सकते हैं, लेकिन एक दिन पानी नहीं आएगा तो हम वो तो प्रॉब्लम जो आता है पीने से लेकर बाकी जितने भी हम कह सकते हैं। पहले हो सकता है ये जो वाटर रिसोर्स, ड्रिंकिंग वाटर, ये बहुत सारी ये जो डिपार्टमेंट अलग अलग होके था, लेकिन 2019 में भारत सरकार ने इसको एक अम्ब्रेला का नीचे, मतलब जल शक्ति मिनिस्ट्री में पीने से पानी लेकर कृषि तक सबको एक डिपार्टमेंट में लाया गया है। उसी दिन से ये काम प्रधानमंत्री का प्रेरणा से ये ठीक ढंग से चल रहा है। हम आप जितने भी प्रेजेंटेशन देखा, जितने भी अभी प्रोग्राम चलता है, स्कीम चलता है, पहले तो एक्चुअली वास्तव में जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे एक यूनिट मान के, मान लीजिए कि हमारा डिस्ट्रिक्ट में रिक्वायरमेंट क्या है, कितना है, ड्रिंकिंग वाटर में कितना है, एग्रीकल्चर में कितना है, इंडस्ट्री में कितना है, ऐसे जब हम कैलकुलेशन करेंगे रेनफॉल कितना होता है, हमारा पास उसको स्टोर करने के लिए कितना कैपेसिटी है, ये तमाम विषय को जब कैलकुलेशन करेंगे देश भर में ये एक हमारा पास आ जाएगा, एक आंकड़ा आ जाएगा कि हम लोग का रिक्वायरमेंट कितना है और हमारा पास कितना रहता है। क्योंकि बहुत सारी समय में हम लोग देखते हैं कि रेनी सीजन में पानी सीधे सीधे समुद्र में बह जाता है, लेकिन जब अपना अपना डिस्ट्रिक्ट या अपना अपना स्टेट में कोई भी सरकार जब ये चिंता करे कि जितने भी जो पानी वेस्ट हो जाता है, मतलब चल जाता है समुद्र को, हम किसी भी जो हम लोग का प्लान या स्कीम चलता है उस हिसाब से हम उसको स्टोर करेंगे। निश्चित रूप से आने वाले दिन में ये जो संकट हम लोग शंका करते हैं कि कहीं ना कहीं ये वाटर प्रॉब्लम आ जाएगा, लेकिन जब तक ये अवेयरनेस नीचे तक नहीं आएगा, सिर्फ खाली ये भारत सरकार, राज्य सरकार नहीं, कोई डिपार्टमेंट नहीं, सबको, जैसे कि कहा जाता है कि ये जल आंदोलन को, जन आंदोलन में जब परिवर्तन नहीं होगा तब तक ये काम नहीं होगा। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा, आज हम लोग जितने भी देखें ऐसे बहुत सारे भारत सरकार का जो स्कीम है
उस स्कीम के अंतर्गत जब डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो कलेक्टर लोग हैं वो अपना अपना तैयार करें, निश्चित रूप से हम लोग के पास पानी का कोई समस्या नहीं रहेगा, सरप्लस भी हो जाएगा। क्योंकि मेरा अनुभव है, मैं तो बहुत सारे प्रदेश जाता हूं, कुछ दिन पहले झारखंड भी गया था। जैसे कि प्रधानमंत्री का आग्रह हो कि एक एक बूंद भी पानी को हम कैसे स्टोर करें, वेस्ट ना करें। एक कैंपस में गया था, सत्संग कैंपस, वहाँ सरकारी व्यवस्था कुछ नहीं है, लेकिन अपने अपने हिसाब से वो लोग ऐसे करके रखे हैं जहाँ संकट था पानी का, वहाँ अभी सरप्लस है। इसी तरह हैदराबाद में भी हमने जब गया था, एक कार्यक्रम हो रहा था, वहाँ भी मैंने देखा कि किसी तरह वो पूरा कैंपस में रेन वाटर से लेकर बाकी जितना वेस्टेज वाटर ये कैसे वो लोग स्टोर करते हैं और उसका यूटिलाइज करते हैं। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि ये खाली एक दिन में ये कार्यक्रम करके हम समाप्त नहीं करेंगे। आज हम संकल्प लेके जाएंगे कि निश्चित रूप से भारत सरकार का जो कार्यक्रम है, भारत सरकार का जो प्लान है, प्रोग्राम है, स्कीम है, उसमें मेरा आग्रह रहेगा राज्य सरकार या राज्य सरकार का प्रतिनिधि जो लोग बैठे हुए हैं, ये लोग सामने आ जाएं, मिल के भारत सरकार और राज्य सरकार के साथ मिल के जब काम करें, आज जितने भी समस्या है, जो इंटर स्टेट का मामला हो और कुछ भी हो, वो निश्चित रूप से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और हम लोग जो बैठे हुए हैं जनता की सेवा करने के लिए, निश्चित रूप से ये फ्रूटफुल होगा। और प्रधानमंत्री का जो सपना है, जो आग्रह है, जैसे 2024 तक हर घर को पानी मिलेगा, ऐसे बहुत सारी उन लोग का मन में, जैसे अभी अभी हम लोग देख रहे थे कैच दी रेन, मतलब एक भी बूंद को हम पानी को वेस्ट नहीं करेंगे, कैसे उसको स्टोर करेंगे। हम लोग का पास बहुत सारी मैकेनिज्म है, बहुत सारी सिस्टम है, जैसे कि चेक डैम है, छोटा छोटा बैरेज कर सकते हैं, और वाटर हार्वेस्टिंग, बहुत सारी व्यवस्था है। इसलिए इच्छा शक्ति का आवश्यकता है। जब तक हमारा इच्छा शक्ति नहीं रहेगा, हम जितने भी प्रोग्राम चलाएं, कुछ भी करें, ये नहीं हो पाएगा। इसलिए अंतिम में ये मेरा आग्रह रहेगा, हम जितने भी आज ये कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, हम ये अपना अपना लेवल में और अपना अपना जो डिपार्टमेंट है, हमारा दायित्व है, उसमें जब ठीक ढंग से काम करेंगे और उसको व्यापक करेंगे, विस्तार करेंगे, निश्चित रूप से आज दुनिया में कुछ हो जाए, लेकिन हमारा देश में, हमारा प्रदेश में, हमारे जिले में ये संकट नहीं आएगा। धन्यवाद। It is requested for everybody to stay back for high tea. No, JP will deliver the vote. Now I would like to request Director, National Water Mission, Ministry of Jal Shakti for vote of thanks. Honorable Minister of State for Jal Shakti and Tribal Affairs, Government of India, Shri Visheshwari Duji. Honorable Minister of State for Jal Shakti and Food Processing Industry, Government of India, Prahlad Singh Patel ji. Special Secretary, Ma'am DOWR, RD and GR. Additional Secretary and Mission Director, National Water Mission. Senior officers from Government of India and State Government. My dear colleagues and friends. A very good evening to all of you. First of all, I extend hearty congratulations to everyone on the World Water Day. I take this opportunity to extend a heartfelt thanks to Honorable Minister of State for Jal Shakti and Tribal Affairs, Government of India, who took time from his busy schedule for gracing this event on the occasion of the World Water Day. Sir, you have been a source of motivation and guidance in successful implementation of various programs and schemes of the government, including Jal Shakti Abhiyan and Catch the Rain, sir. I express special thanks to Honorable Minister of State for Jal Shakti and Food Processing Industries, Government of India, who has been steering programs like Jal Jeevan Mission, Swachh Bharat Mission from the forefront, which are the flagship programs of the Government of India. Sir, it may not be possible without you
to translate these schemes into a huge success without your valuable guidance. I would extend my sincere gratitude to Special Secretary Ma'am, who steered National Water Mission for some time and whose keen interest in Jal Shakti Abhiyan campaign took it to a greater heights. Incorporation of additional focused interventions like Amrit Sarovar, springshed management, protection of catchment areas, and gender mainstreaming was our initiatives. I express vote of thanks to Additional Secretary and Mission Director, National Water Mission, who has been steering the mission with a greater zeal and enthusiasm. She has been the guiding force behind day-to-day implementation of the monitoring of Jal Shakti Abhiyan Catch the Rain program, Bureau of Water Use Efficiency, Research and Development schemes of the department. She has been working tirelessly in breaking silos and verticality in the water sector, ma'am, and has been instrumental in binding the stakeholders concerned in water sector. I extend special thanks to all the children and youth who have connected through us online. And in this connection, I thank Prasar Bharati, Doordarshan, and NYKS to be partnering with us to celebrate this occasion. I extend a special thanks to NWM team, ICRAF, especially my friend Chandrasekhar Biradar Saab, and APAC, without whose active involvement this event would not have been so grand. I express thanks to all my colleagues, friends, officers for participating in this event and making this a successful event. I would conclude by saying, let us promote and support Jan Andolan to Jan Andolan for making our country water secure. Thank you once again. Thank you, sir. I would like to request everybody to stay back for high tea. One